Good day to all of you. Today we are going to do a topic, one of the topics of grammar, and that is changing of voice. How to change the sentences in active voices, inactive voice into passive voice. For understanding this topic, we must keep in mind certain things. One is that we must know what is the difference between active voice and passive voice. In active voice, the subject and the verb, there is one sort of relationship in between them in active voice, and it changes in passive voice. One thing. The second thing is that when you speak, or when you say the things in active voice, when the speaker speaks the sentences with active voice, it means his tone is different from that that person who speaks the things in passive voice. The tone is different between the two sentences. To convert sentences from active voice to passive voice, we must keep in mind one thing, that there we have two kinds of verbs: transitive verb and intransitive verb. Transitive verb, the sentences with transitive verbs can be changed into passive voice, but the sentences with intransitive verbs, they cannot be changed into passive voice. Yes, there can be, and there are exceptions as well. First, we must know what actually this transitive verb is. So I have written a sentence on the board. I eat apple. I eat apple. This is the verb here is this eat, and it is transitive verb. And transitive verb is a verb which takes an object, a direct object after it. Or you can say where the action passes from subject or from verb itself to the object. Here you can say the action is, the verb is eat. Eat आपका verb है, ये आपका action है, और ये action जो है यहीं पर इस verb पर ही stop नहीं होता है, बल्कि it passes to the object, and the object here is apple. It means a direct object means when your object is directly affected by the verb. When the object is directly affected by the verb, that verb is a transitive verb. Like here, I eat apple. So this apple is directly affected by this verb eat. This is the object is something which is acted upon, and subject is something which acts, or the topic of the sentence. So here आपका action जो है वो pass होता है इस verb से यहाँ object की तरफ. ये object आपका जो है ये बिल्कुल असरअंदाज होता है. It is affected by this verb. I eat apple. This action is this eating. Okay, now it is done upon this particular thing. What is being eaten? It is this particular thing. Apple खाया जा रहा है. So this is affected by this verb. So, and you can say this verb takes a direct object after it, and this is a transitive verb. This eat is transitive verb. Now moving to another verb, that is intransitive verb. When your verb does not take, or when it does not require any object after it, that is intransitive verb. या आप ये कह सकते हैं कि जब आपका एक्शन जो है सेंटेंस में वो वर्ब से या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर नहीं होता है, वो पास नहीं होता है, that means it is the verb used in that sentence is intransitive verb. Like here, he is dancing. Is there any object? There is no object here. Action is dancing, so it does not pass to any object. किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता है, ये ऑब्जेक्ट को पास नहीं होता है. जैसे यहां पर आपका एक्शन पास हुआ था ऑब्जेक्ट पर, सो दिस इज ट्रांजिटिव, एंड दिस डांसिंग इज intransitive. It does not require any object here. He is dancing. तो ये डिफरेंस है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में. शॉर्ट में मैंने बताया आपको. तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि the sentences with transitive verb, they can be changed into passive voice, and the sentences with intransitive verb
can't be changed into passive voice. इसका आप passive voice नहीं बना सकते हैं. So then moving to the topic, how the sentences can be changed into passive voice. This is what we have to learn. हम एक चीज करेंगे कि हम टेंसेस के हिसाब से करेंगे. फर्स्ट वी विल डू प्रेजेंट टेंस एंड देन वी विल डू पास्ट टेंस, वी विल डू फ्यूचर टेंस एज वेल. आपका है हम यही सेंटेंस लेते हैं, आई ईट एप्पल. ठीक है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है. इसकी वॉइस जो हमने चेंज करनी है, दिस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. जब आप एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, दो चीजें जरूर जहन में रखिएगा. वन थिंग इज दैट एक्टिव वॉइस में जो आपका टेंस है, सेंटेंस का जो टेंस है, पैसिव वॉइस में भी वही टेंस रहेगा. द टेंस विल नॉट बी चेंज्ड. अगर आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टेंस वहां पर भी प्रेजेंट टेंस ही रहना चाहिए. दिस इज द बेसिक थिंग. तो जब भी आपने एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हमने एक चीज जहन में रखनी है, एंड दैट इज व्हाट we have to first analyze the sentence. This is your subject, this is your verb, and this is your object. ये आपके object है. जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, the basic thing we have to keep in mind, we have to bring this object in place of subject and this subject in place of object. ठीक है, चलिए लाइए. एप्पल, एप्पल, एप्पल. ये चीज भी माइंड में रखिएगा कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब जरूर लगता है. पैसिव वॉइस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब जरूर लगता है. So if it is present tense में आपके present tense वाले helping verbs, auxiliary verbs लगेंगे like is, am, are. So apple depends upon the subject. जो आपका subject अब यहाँ पर है, यहाँ पर आपका subject जो है singular है. So we have to use is here. Present tense and the subject is singular, is. Apple is. दूसरी चीज, पहले आप object को subject की जगह लाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे. सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज व्हाट, नाउ इट इज द टर्न ऑफ दिस वर्ब. पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ऑलवेज. ये आपने अपने जहन में रखना है. व्हेनेवर यू हैव टू मेक पैसिव वॉइस, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस. एप्पल इज ईटन, ओके, एंड देन फिर आपका सब्जेक्ट है, इसको आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है. एप्पल इज ईटन बाय, एक वर्ड आप यहां पर यूज करते हैं, बाय होम, बाय दिस आई. व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस आई इनटू ऑब्जेक्ट, यू हैव टू यूज मी. आई का ऑब्जेक्ट जो है वो मी होता है. सो दिस इज द कन्वर्जन. दिस इज हाउ एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. एप्पल इज ईटन by me. So you can see the difference between the tone of these two sentences. दो चीजें आपने जहन में रखनी है, तीन चीजें while converting active voice sentence into passive voice. And what is it? सबसे पहले object को आपने subject और subject को आपने object की जगह, इनको change करना है आपने. उसके बाद आपका auxiliary verb आएगा और उसके बाद verb की third form आएगी. उसके बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे. आई का ऑब्जेक्ट मी है. तो थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी प्रोनाउंस हम यूज करते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं, किस सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्ट आता है. सो यू कैन सी हियर आई
is changed into me. The object of I is me. We into us. You remains same. You. He into him. She into her. They into them. And if it is anybody's name here, then it remains same. The name remains same. ये चीज आप mind में रखेंगे. So it was the conversion of this present tense into passive voice, the conversion into passive voice of the sentence which was here in present tense. उसके बाद हम अगर ऐसा करते हैं कि एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस में ही, लाइक शी हिट्स द बॉल. शी हिट्स द बॉल प्रेजेंट टेंस है आपका. अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में. द फर्स्ट थिंग, बॉल आपका, या शी सब्जेक्ट है आपका, हिट्स वर्ब है आपका, और बॉल इट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस वर्ब. ठीक है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट. सो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे. द बॉल, so it is present tense, so we have to use auxiliary verb which are used in present tense, is, am, or जो भी. So we can use is here again. थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं. She hits the balls. The balls. Now this is plural. We have to use are here. The balls are, then the third form of hit. It is hit. The balls are hit by she. तो she का मैंने आपको बताया, इसका ऑब्जेक्ट हर आता है. This way. The balls are hit by her. Simple. उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? शी इज हिटिंग द बॉल. शी इज हिटिंग द बॉल. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका. फर्स्ट सब्जेक्ट, the ball, then again auxiliary verb is. The ball is one extra word you have to use here, and that is being. The ball is being, then third form of verb. As I said already that in passive voice we have to use third form of verb. The ball is being hit by her. The ball is being hit by her. ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था. तो इस तरह से हमने किया. एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि जब भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की वॉइस चेंज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस की वॉइस चेंज करते हैं, इन पैसिव वॉइस यू हैव टू यूज दिस बीइंग वर्ड. whatever continuous tense it is, you have to use being in the passive voice. फिर हमारे पास आता है आपका we have done the job. We have done the job. ये जो है आपका present perfect tense है. Present perfect tense. Now, how it is changed into passive voice? The first thing is job. The job
the job, and then auxiliary, the job. अब देखिए यहाँ पर have है, लेकिन यहाँ पर हम has लगाएंगे. Why? It should be, your verb should be always in accordance with the subject. The आपने देखा होगा subject verb agreement, वो lecture शायद आपने सुना होगा. तो it must agree with the subject. The job, it is it is singular. We have to use has with this. The job has one extra word in perfect tense. Been. The job has been done by we into us. The job has been done by us. Perfect tense, ये याद रखिएगा, जब भी आप perfect tense की voice change करते हैं, you have to use this word been almost always in passive voice. You have to use this been extra word. बाकी कुछ भी extra नहीं है, एक been word हमने extra लगाया. And third form of verb, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया. And then this we is changed into us because the object of we is us. Now it was present perfect. Now the last one I would like to do with you is present perfect continuous. We must know that कि present perfect continuous जो है इसका passive voice जो है नहीं बनता है. We can't change the sentence of which is in present perfect continuous. We can't change it into passive voice. There is it's not possible here. So it was all this we did present tense today. How the sentences in present tense can be changed into passive voice, and the rest of the topic past or future जो है उनको कैसे change किया जाएगा, we will do it in the next lecture, and please watch my next video as well. Thank you very much.